Let's see how to print the table of any number in Java. Just create a file, table.java. Okay. And here, just add the command program for print table of any number. Just create a class, name is table, and create a main function. Yeah. And just import the scanner class, import java.util.scanner. Here, just create the object of scanner class, scanner sc equals to new scanner and system dot in. वेरिएबल बना लेते हैं इंटीजर n इक्वल्स टू इंटीजर n, यानी कि we just need to pass the message system dot out dot print. यहाँ पे लिखेंगे enter यानी नंबर, इस नंबर का अपन को टेबल चाहिए, एंड इंटीजर n में उस नंबर को गेट कर लेते हैं sc डॉट नेक्स्ट. ओके, लूप चला है i इक्वल्स टू 1 से लेके y लेस देन और इक्वल्स टू 10 तक चलेगा टेबल के लिए. इसके अंदर हम लोग लिखेंगे system डॉट आउट डॉट प्रिंट. सिंपली यू कैन पास n इंटू n जो नंबर रहेगा वो, और i जो लूप का वेरिएबल रहेगा, उन दोनों के मल्टीप्लिकेशन को हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं. एंड देन अपडेट द लूप i इक्वल्स टू i प्लस 1. नेक्स्ट, या सेव इट, just compile java c table dot java table, enter any number 6. So table is printed like this. So we need to do one thing, just add println here and save it, java c table dot java and java table, enter any number 7. So here is the table of save. Okay. एंड इसको हम लोग और अच्छे तरीके से भी प्रिंट कर सकते हैं. हाउ टू राइट हियर, सिंपली राइट हियर एन, ओके, एंड देन प्लस इन्वर्टेड कॉमा में हम लोग टाइप करेंगे मल्टीप्लाई का साइन, और देन प्लस लगाएंगे, और यहाँ पे हम पास करेंगे आई को, देन प्लस लगा के इन्वर्टेड कॉमा में इक्वल का साइन यूज करेंगे, और देन एन इंटू आई. बेसिकली हम एन इंटू आई का मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स टू जो वैल्यू आएगी वो प्रिंट कराना चाहते हैं. ठीक है, सेव करें और इसको वापस से रिकम्पाइल करेंगे हम लोग. जावा सी एंड टेबल जावा, enter any number 5. So see, 5 into 1 5. So here is the complete explanation of this. Okay, so this is how you can print the table of any number in Java.